अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कायद-ए-आज़म स्पीच एट क्वेटा म्यूनिसिपैलिटी जून 15, 1948। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, इफ़ यू आर न्यू इन दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। आई एम रीडिंग फ्रॉम द नोट्स। द कायद-ए-आज़म एड्रेस ऑफ 15 June 1948 at Quetta Municipality is very significant from many point of view. Although in this address he touched various issues, but the chief purpose of the speech was to declare provincialism a curse. इस स्पीच में बेसिक जो उनका मेन पॉइंट था वो ये था कि प्रोविंशियलिज़म जो प्रोविंसेस हैं जैसे पाकिस्तान के हैं पंजाब सिंध सरहद ये, तो वो कहते थे कि ये जो हैं ये नहीं होने चाहिए, ये एक कर्स है। पाकिस्तान को हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हम पंजाबी हैं, हम सिंधी हैं, हम पाकिस्तानी हैं और हमें पाकिस्तानी बन के ज़िंदगी गुजारनी है। तो ये जो मेन पर्पस था इस स्पीच का वो यही है। In the beginning of the speech, he expressed his profound gratitude to all those who generously contributed to the relief fund for the refugees. I greatly appreciate your handsome and generous contribution to the relief fund. The welfare of refugees and all who suffered because of Pakistan was achieved in the responsibility of us all. ये जो स्पीच है उन्होंने ऐसे स्टार्ट की है। ये लाइंस हैं कायद-ए-आज़म की। देन द कायद-ए-आज़म highlights the importance of the city of Quetta. Quetta has always been the central to all the important events in Balochistan. After the creation of Pakistan, its importance has increased even further. Then the next part of the speech is the most important part, and it is the part around which the whole speech revolves. It is the crux of the entire speech. Here Jinnah lays great stress on the importance of national unity and oneness among all the provinces and regions of the country. He believes that we should love our city and province, but we should not ignore a greater love for our country. वो कहते हैं हमें अगर प्रोविंसेस बनाए हैं तो ठीक है, हमें उनसे प्यार है, लेकिन जो हमें मेन प्यार है वो हमें एक कंट्री से होना चाहिए, जो कंट्री हमारी पाकिस्तान है। It is a grave mistake to give more importance to one's local provincial interest while ignoring the collective national interest. He emphasized the point as, it naturally pains me to find the curse of provincialism holding sway over any section of Pakistan. Pakistan must be rid of this evil. Jinnah believes that at this juncture, any subordination of the larger interest of the state or provincial or local or personal interest would be suicidal. एट द एंड जिन्ना जो हैं वो कहते हैं कि जैसे हमें पंजाबी बलोची सिंधी से ऐसे बन के नहीं सोचना चाहिए। वो कहते हैं वी आर नाउ ऑल पाकिस्तानीज नॉट बलोचीज पठान सिंधीज बंगालीज पंजाबीज एंड सो ऑन। वी शुड बी प्राउड टू बी नोन एज पाकिस्तानीज एंड नथिंग एल्स। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। थैंक यू।